I'm Dr. Adil Ahmed Siddiqui. I'm consultant orthopedic surgeon, Ortho Unit 2, Civil Hospital, Karachi. So today our main aim is to discuss and to learn the uh, beginning of orthopedic examination and history taking. The orthopedic start, every teaching start from patient's history taking and clinic examination. Then after that, we will develop into investigation and management. Into this is all the things going on in every field of medicine, either a medicine or a surgery. We will start from the history and then clinic examination. This is the main thing. And the orthopedic or musculoskeletal history is little bit different, slightly different from the other medical and surgical fields. So I will start to focus about these things. I will talk about these things where we are different from others. So you have to take some other um, aspects. You have to learn some other aspects which are different from other fields of medicine and surgery. So let's start. Musculoskeletal taking most important step in making a diagnosis, and we all know that some of the great surgeons of the times used to say that listen to the patient, he's giving you the diagnosis. So what it means? It means uh, taking the history of the patient, it gives you a 60% of the diagnosis. Then the rest of 40% is by means of uh, investigations or relevant clinical examination. So history is very prime. Anything start from history. This is the base of any medical field. Then we will build up the uh, buildings. This is the major building blocks. So in orthopedics, there are two types of history: either traumatic history or a non-traumatic history. Two types. Traumatic, other patient come from any history of a trauma. This is mostly treated in emergency or in our clinical settings. And the non-traumatic may be sports-related problems, pediatric problems, cold orthopedics, infections, tumors. These are the including non-traumatic. So everything had different questionnaires, different things to ask, different aspects to cover. I think you will all get these things. So demographic features are the same. For example, age, sex, right hand dominant or left hand dominance, especially in cases of hands, profession and gender, socioeconomic status. These things are same. Then comes from the chief complaint or a presenting complaint, presenting illness, HOPC, then a history of presenting illness. Then we will talk about the functional level, then the some musculoskeletal systematic review, then the past medical history and the past surgical history, drug history, smoking, occupational history, allergies, family history, and socioeconomic history. These all the things we will cover. So the main diagrammatic schemes are the same as we talk about the medicine or a surgery, and but the sometimes some questionnaires are different in orthopedics as compared to medical. Medical stress on some medical findings more or stress on medical, but in orthopedics we will discuss some main other two basic pillars, trauma or a non-trauma. So we will ask questions accordingly. So musculoskeletal system, what we have got in musculoskeletal symptoms. Either patient comes to us with a pain or a stiffness or swelling, or he would say that I am inability to bear weight after history of fall. A patient comes to you with some form of deformity. The patient may be a young man, old man, deformity of the knee, deformity of the limb, deformity of any bone, deformity of the back or spine. Patient comes to you with the history of limb, painful walking,
Either he will come to you with the history of loss of function, for example, history of he is unable to pop up the wrist, he is unable to move the thumb, he is unable to uh, uh, pull the shoulder up. These are the things. Then he can come with the altered sensation that he is not, he is numb, he is feeling numb in two fingers, index and the middle and thumb. So you have a carpal tunnel in your mind. But he can comes with a weakness, for example, in cases of myopathies, in cases of neuropathy, you can come up with the history of weakness. So these are the things we will focus on. Like pain, we will have a location. We must have to ask where the pain. You must ask patient, just point out where the pain is, pointing your finger, like my pain is the shoulder. Which part of the shoulder? This part of the shoulder has different consequences. This part of the shoulder have different consequences. This part of the shoulders has different consequences. So you have to locate the pain. Then the pain radiate. For example, in cases of neck pain, it can radiate to the shoulder, it can radiate to the hand, it can radiate to the back. So you have to ask for the radiation. Then the type, how long you have to take, acute or a chronic, how did it start. For example, if the patient give you a history of trauma, for example, backache, and the patient give you the history of weightlifting. For example, sports injury, the patient's playing sports and he develops tennis elbow. So how did it start? So these are the things we should have to consider while talking on the pain. Then the progression of the pain, is it better or same, हर वक्त एक ही जैसा रहता है, or it's progress or worse with the passage of time. For example, in the pain worsens as the days goes on, and in cases of rheumatoid arthritis, the pain worsens after rest. For example, the patient wakes up in the morning and the pain worsens. So there is a difference. So you have to ask about the progression of the pain. Then comes the mechanical pain, um, comes with walking or climbing stairs. So you have to ask either the pain is at rest, night pain, or it is constant. And what are the aggravating and the relieving factors? You have to ask. Pain aggravates by doing this, pain aggravating by this, by this, and either pain relieved by rest or pain relieved by taking any medicines. We have to consider this. We have to incorporate the pain. So it may be stairs, it may be mechanical, it may be twisting, kneeling, squatting. These are the things that we have to ask sometimes. Then comes to swelling. Patient will say that I've got a knee swelling, I've got an elbow swelling. And you have to ask about this, how the swelling comes. Is an acute onset or a chronic onset? What is the duration starting exactly? And it is associated with trauma or not with trauma? Is it associated with fever or not a fever? Is it painful or not painful? It is localized, एक ही जगह पर है, or it's generalized. This swelling, you have noticed similar types of swelling elsewhere in the body, or it is constant. For example, sometimes you feel swelling, it appears or disappears. So you have to ask these questions when talking about the swelling. It is rapidly growing or slowly growing. For example, in chronic cases, you have got slowly growing lesion, and in case of acute, for example, in trauma, you get a hemarthrosis or hematoma in the knee suddenly develop. So it goes synovitis, for example, cases of infection, abscesses. So you have to ask about these things. It is rapidly growing or slowly growing. Aggravating and relieving factors associated with swelling, associated with injury or not. These are the things. Thus the swelling moves. Thus it is localized. Then comes to the instability. In orthopedic, these are the things.
Pain, swelling, these are the things are general, but not now comes to the instability. This is the orthopedic part. Patient will say that while I'm I'm walking, I feel my knee gives up. So it means that the knee is unstable. My elbow pulls up, my shoulder dislocates. So these are the symptoms or signs of instability. So when the patient gives you the history of instability, then you will ask following question that how it occurs, onset, how it start, any history of trauma, how much frequency that the instability. For example, sometimes we talk about the shoulder dislocation. So patient gives a history of that it is frequently dislocated. So it may be the habitual type of dislocation or a recurrent dislocation. But when you ask and patient says, I have only one episode of dislocation, so you can say that this is not a very recurrent type of dislocation. So, what are the triggering factors? These are giving way, locking, especially in cases of the knee. I cannot trust my legs. These are the things that patient can ask, and you can associate symptoms like swelling and pain. Locking may be knee. Patient gives you a history of my knee lock. मुझे लॉक हो जाता है नी चलते चलते मैं गिर जाता हूँ अचानक से मुझे झटका लगता है मेरा घुटना नहीं मुड़ता है इस तरह की चीजें जो ना पेशेंट बोल सकता है so you can say that these are the symptoms. What are the reasons behind it? And you should have to take some clue the where these types of locking and clicking arise from. For example, it may be caused by loose bodies, it may be caused by menstrual care, and it may be due giving way. For example, it may be caused by due to anterior cruciate ligament tears, maybe patellar subluxation or dislocation. These are the symptoms. You can ask exactly where it arises from. Then the deformity. You can see that this is the child with the deformed legs, and you can see. Okay. Then you will ask when you start, when you notice. आपने खुद notice किया था या किसी ने आपको बताया था. Sometimes there are some deformities which are not noticed by the patient, but somebody else tells you. For example, in torticollis, and for example, in the back, sometimes in sprinkled shoulders, you have asymmetry of the shoulders. Somebody else tells you. So these are things, and this deformity is progressive or not. It is increasingly. For example, you can see there are some children with Bow's leg, and you can ask कि ये पहले से बढ़ रही है, ये अचानक से बढ़ गई है, तेजी से बढ़ रही है, या वहीं रुकी हुई. So this gives you the orientation, give you the orientation about the mechanism, the mechanics of the deformity. Either it is a static or a dynamic one. So it's static one means that it is stable, associated with symptoms, deformity associated with symptoms, for example, pain and stiffness, and some impaired functions. You have to ask for this. In the past history of trauma and surgery, in the past medical history, for example, in polio, in neuromuscular cases, then you have to some ask about question relevant to this. Then the limping patient comes you with the limp and gives you the pain of pain during walking, and then you have to ask the onset about what is either it is acute or chronic or traumatic or non-traumatic or painful and painless. These are questions you have to ask when the patient gives you history of limping. Then it gives you have patient use walking aid or not. Then the functional disability, associated swelling deformity or a fever. Sometimes patient have a septic arthritis of the knee comes to you with a limping gait, and you have to ask these questions in order to comes or formulate the diagnosis. Then comes for the loss of function. How has this affected the patient's life? Daily activities. You have to ask the patient how it affects your daily life or daily activities. For example, either you can perform prayer or you can squat
whether you use your normal toilets, getting out of chairs, it's difficult. Getting out from the bed or floor, how it affects you, how it affects your driving skills, stairs, climbing stairs, and putting socks. It is difficult or not. Sometimes how far you can walk. These are uh, these are basic norms. Sometimes patient present with disturb these norms, and you assess all these things and finally get some formulation that this is a very intense disability or a mild disability. So these are the things you should have to consider in case of while taking the orthopedic history. What are the red flags? When we talk about orthopedic histories, there are some red flags. Patient gives you these things, these histories. Whenever patient gives you these types of histories, then you will consider that these are something serious. For example, patient comes to you and give you history of weight loss. मेरा वजन बहुत तेजी से गिर रहा है, मैं कमजोर हो गया हूँ. What is the reason behind it? Maybe it is associated with tumor, maybe associated with the infection, maybe associated with tuberculosis, maybe associated with the any other abnormalities. So you have to think about this. If the patient comes to give you history of fever and then associated orthopedic symptoms, then it is a red flag. You have to be vigilant. Okay, what is the reason behind the fever? Because some inflammation of intense intensity is going on in the body. You have to ask about the fever. How much fever? High grade, low grade, either intermittent fever or any fever is relieved with any medications. Have you taken the medicines? Then the loss of sensation. For example, if you got a loss of sensation, in, especially in acute carpal tunnel, it is an emergency case, or then in back cases in the prolapsed disc, you can have a lot of loss of sensation on the foot or on a lower extremity. Then the loss of motor function. Again, if any nerve compression, acute nerve compression, then there is a loss of motor function. It may be traumatic, it may be atraumatic. So you have to the detailed history about these are the red flags symptoms that you have to be very careful whenever patient gives you the history of these things. Certain difficulty in urination or defecation. Sometimes patient says that I have no control over the urine or defecation. It means there is something going on at the spinal level, some spinal level, that there's the disc prolapse and there is quad equina or something that's like this. So you have to also assess the some risk factors, for example, ages, gender, obesity, lack of physical activity, and some dietary status of the patient, smoking, occupation. These are the, for example, ACL is more common in footballers. Tennis elbow arise from more common in tennis players. Golf elbow is arise from golf patients. So family history is also important. Sometimes there are some disorders which is associated with family. Family is arthritis is also rheumatoid arthritis. Some inchondromas. These are the associated with family. So you have to take the family history. For example, there are some disorders. For example, clubfoot. Sometimes DDH, developmental dysplasia of the hip, is associated with family. So you have to take detailed family history whenever you have this type of patients uh, which need to be assessed in family. Infections, medications is very important. For example, steroids. Using of steroids is more common in our country. So it caused severely damage the musculoskeletal um, anatomy. For example, it may lead to
avascular necrosis of the femoral head, and many others. For example, scaphoid, and steroids can lead to the osteoporosis, secondary osteoporosis. So you have to take the history of steroids, how long you have taken the steroids, and what are the dosage you have taken the steroids. Alcohol is very important. It also leads to musculoskeletal disorder. And the injury and patient history of any cancer, patient can present with the swelling, pain, and pathological fracture. For example, the patient is of a breast carcinoma and it can present to you with the pathological fracture of the humerus. It can present with this. But for your patient is coming for a fracture, then you have to assess it is normal fracture or a pathological fracture. Then you have to assess if the pathological, for example, the bone is not easily to break, but if the bone is pathological, it can break easily by triple trauma. So you have to assess, and you will only assess after taking the history. Patient gives you the history. Then जरा सा हल्का सा मुझे झटका लगा, किसी ने ऐसा हल्का सा झटका दिया, भाई हड्डी में यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है. फिर आपने बाकी इनको डिटेल दिया, देखा एक्सरे के अंदर, देखा आपने तो एक्सरे के अंदर फ्रैक्चर. फिर आप देखेंगे जितनी छोटी उसमें से एक्सरे में फ्रैक्चर हो गया, इसका मतलब है कि बोन वीक थी. व्हाट इज द रीजन ऑफ वीकनेस ऑफ द बोन? Severe osteoporosis, some other metabolic disorders, or any other pathology. फिर आप इसको further elaborate करेंगे. फिर पेशेंट से पूछेंगे कोई आपको और बीमारी तो नहीं है. फिर वो बताएगा कि मुझे कैंसर था और मुझे ये प्रॉब्लम हुआ है. समटाइम्स वो डायग्नोस ऑलरेडी हुआ होता है, समटाइम्स आप पहली दफ़ा उसको डायग्नोस करते हैं, तो आपको देखना पड़ता है. समटाइम्स वो जो ट्यूमर है वो आपसे लिंक होता है, बोन से रिलेटेड ट्यूमर है. समटाइम्स वो आपसे बोन से रिलेटेड नहीं होता, प्राइमरी ट्यूमर नहीं होता, बल्कि सेकेंडरी ट्यूमर्स जो कि अराइज फ्रॉम अदर फॉर एग्जांपल अदर एरियाज. ब्लैडर ट्यूमर्स है, अपना प्रोस्टेट का ट्यूमर है जो बैक पे जाता है, बैक के साथ प्रेजेंटेशन करता है. जो ब्रेस्ट जो कार्सिनोमा है, दे कैन प्रेजेंट विद यू मेटास्टेसिस इन द ह्यूमरस female or a subtroch level. So you can have to assess. आप प्राइमरी को डायग्नोस करना ऐसे केसेस के अंदर, फिर आपको उसकी हिस्ट्री उस हिसाब से ले. फिर समटाइम्स फैमिली आपके प्राइमरी बोन के अंदर है, तो आपको बोन की हिस्ट्री लेनी पड़ेगी डिटेल. तो उसमें फैमिली हिस्ट्री की भी डिटेल आती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. So you have to discuss all these things. Whenever you talk about infections, always consider cancer or neoplasm in your history. Always. Not only this, बल्कि जब आप हिस्टोपैथोलॉजिकल इसकी एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, कल्चर लेते हैं, तो उस वक्त भी आपको उसको डिफरेंशियल्स पे रखना पड़ता है. समटाइम्स मेनी cancers are there that present with the pus formation or infection, but whenever जब आप उसको कल्चर के भेजेंगे तो कल्चर पे इतना कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जब आप हिस्टोपैथोलॉजिकल भेजते हैं तो फिर वो कैंसर के तौर पे प्रेजेंट करते हैं. तो आपको हिस्ट्री बता दें, तो हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट है इसके अंदर. नॉर्मल हिस्ट्री में उसमें थोड़ी सी चीज़ इस तरफ. फिर आपने इनकी पेशेंट के बारे में पूछना है, उनकी मेडिसिन क्या कौन लेती हैं, एंटीबायोटिक्स लिए है नहीं लिए है, प्रीवियसली एंटीबायोटिक के पेशेंट्स की, और एनाल्जेसिया कौन से ले रहा है, पता चला आपको किस किस्म का एनाल्जेसिया ले रहा है पेशेंट, कितने अरसे से ले रहा है, उसकी वजह से भी क्या, आपने कभी फिजियोथेरेपी कराई है नहीं कराई है, ऑर्थोटिक्स कौन कौन यूज करते हैं, वॉकिंग एड्स, सस्पेंड्स, ऑपरेटिव अगर ये है तो किस किस्म का ऑपरेशन हुआ है, कब हुआ है, कितनी दफ़ा हुआ है, क्या क्या किया हुआ, कितने ड्यूरेशन में हुआ, सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी. कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई थी नहीं हुई थी, पेरी ऑपरेटिव पीरियड एंड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड साइलेंट था या उसमें कोई प्रॉब्लम्स थे, वो आपको डिस्कस करना पड़ेंगे. स्पेशल समटाइम्स मस्कुलोस्केलेटल हिस्ट्री, स्पेशली फॉर एग्जांपल ये तो जनरलाइज हमने बात कर ली ऑर्थोपेडिक हिस्ट्री की. अब समटाइम्स आपके पास पीडियाट्रिक पेशेंट आते हैं, तो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक हिस्ट्री अलग हो जाती है. फिर आपके स्पाइनल केसेस आते हैं, स्पाइनल अलग हो जाता है. फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड हिस्ट्री होती है, पेशेंट आपके पास स्पोर्ट्स हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट करता है. मस्कुलोस्केलेटल ऑन्कोलॉजी की हिस्ट्री अलग होगी, मस्कुलोस्केलेटल इन्फेक्शन की हिस्ट्री अलग होगी, और थोड़ा सा डिटेल लेते हैं. ये जनरलाइज मैंने बात की.
अगर आपका पीडियाट्रिक पेशेंट आता है, बच्चा आता है, तो आपको क्या क्या चीजें पूछनी है? आपने उनसे पूछनी है, एक पेशेंट फुल टर्म था या प्रीमेच्योर था, प्रेगनेंसी कैसी थी, नॉर्मल थी नहीं थी, डिलीवरी कैसे हुई है, फैमिली हिस्ट्री कैसी है, बच्चों में और नई बीमारी है या नहीं है, पेशेंट किस तरह गया था, उसको एडमिशन की जरूरत पड़ी थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ी थी, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन केसेस ऑफ पोलियो बहुत जरूरी है, माइलस्टोन कैसी थी, सेरेब्रल पासी को आपने रूल आउट करना है, नेक किस कब हुई, बैठना कब स्टार्ट किया, चलना कब स्टार्ट किया, ये सब चीजें बच्चों के अंदर एक आम ऑर्थोपेडिक हिस्ट्री के अंदर अगर पीडियाट्रिक हिस्ट्री आएगी तो ये सब जरूर क्वेश्चन आपने पूछने और ये सब ऐड होंगे, क्योंकि बच्चा तो बताता नहीं है आपने कब नोटिस किया, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, तो ये भी सब क्वेश्चन आपके लिए। अब अगर हम स्पाइन की बात करें, स्पाइन फिर एक अलग चैप्टर आ जाता है, पेशेंट बैक एक के साथ प्रेजेंट करता है, फिर आपको उसने पूछना पड़ता है कि पेन एग्जैक्टली कहाँ रेडिएट कर रहा है, कौन से डर्माटोम में रेडिएट कर रहा है, कौन से मायोटोम में रेडिएट कर रहा है, क्वेश्चन आपने पूछना होता है। क्या पेन जो है ना कॉफिंग करने से बढ़ जाता है, कमर का दर्द आपका स्ट्रेनिंग से करने से बढ़ जाता है, इसके अपने मसाइल है। स्फिंक्टर कंट्रोल कैसा है, अगर आपके यूरिन पास हो रहा है, यूरिन रुक गया है आपका, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। यूरिन का कंट्रोल नहीं है, स्टूल का कंट्रोल नहीं, इसका मतलब है कि हायर हायर अप जो है ना आपकी स्पाइनल पैथोलॉजीज है। आपको आगे झुककर शॉपिंग ट्रॉली मतलब कि आगे झुक के अगर आप करेंगे तो दर्द कैसा बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है, ये सब आपको ये पेशेंट करना पड़ता है। बैक के साथ पेशेंट आ रहा है, आपको दो चीजें एक्चुअली हमें डिस्क्रिमिनेट करनी है, डिफ्रेंशिएट करनी है। आई जैसे न्यूरोपैथिक क्लॉडिकेशन और वास्कुलर क्लॉडिकेशन स्पाइनल पेशेंट के अंदर, ठीक है, पेशेंट दोनों में तरह से प्रेजेंट करता है टांगों में दर्द के साथ, लेकिन क्या ये न्यूरोपैथिक पेन है या वेस्कुलर पेन है? न्यूरोपैथिक यानी स्पाइनल पेन क्या है? अगर इंक्रीज करता है एक्सटेंशन, बैक कमर को पीछे करें या वॉकिंग डाउन हिल में कहता है पेशेंट मेरा दर्द बढ़ जाता है, तो ये इसका मतलब है कि न्यूरोपैथिक ओरिजिन। पेशेंट के अगर मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ या बैठ गया हूँ तो वेस्कुलर में ये डिफरेंट होता है। वेस्कुलर में अगर वॉकिंग अप हिल पेशेंट का पेन बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी वेस्कुलर क्लॉडिकेशन होगी, उसकी जैसे ऊपर जाएगा तो एनर्जी बॉडी को ज्यादा यूज होगी, जब एनर्जी बॉडी ज्यादा यूज करेगा तो वेस्कुलर अगर उसकी वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज है तो पेशेंट को पेन बढ़ेगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो है ना वो अकोमुलेट होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। इसी तरह पेशेंट क्या है कि जब मैं बैठ के आराम करता हूँ तो मुझे पेशेंट कहता है मुझे पेन बेहतर होता है, इसका मतलब है कि जब वो आराम करेगा उसकी वेस्कुलरिटी बढ़ेगी, उसकी सप्लाई ऑक्सीजन की बेहतर होगी, वो पेशेंट का पेन इंप्रूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क होता है कि आपको यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द न्यूरोपैथिक क्लॉडिकेशन एंड अ वेस्कुलर क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन मींस कि व्हेन यू हैव फीलिंग पेन इन द calf or legs ड्यूरिंग वॉकिंग और एनी एक्टिविटी, तो इस तरह आपको कितना डिस्टेंस आप चल सकते हैं, कितने डिस्टेंस चलने के बाद समटाइम्स स्पाइनल केनाल स्टेनोसिस होती है, इसमें स्पाइनल केनाल जो है ना बिल्कुल स्टेनोस हो जाती है, उसके अंदर आप बताते हैं, उसको आप पेशेंट से पूछते हैं कि कितने कदम चलने के बाद आपको ये पेन जो है ना आपके बढ़ जाता है और पाँव सुन्न होने शुरू होते हैं। तो कहता है कि मुझे मैं जितने कदम चलता हूँ तो मेरे पाँव जो है ना सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, मेरे पाँव जो है ना वो दर्द करना शुरू, मेरी पिंडलियों में दर्द होता है, फिर जब मैं बैठ जाता हूँ तो मेरा जो है ना मेरा बेहतर हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूरोपैथिक एंड वेस्कुलर क्लॉडिकेशन, थोड़ा सा हिस्ट्री में डिफरेंट है। फिर इसी तरह अगर सर्वाइकल का पेन गर्दन के साथ है तो आपको पेशेंट की हैंड की जरूर करनी है, और फिर सारी रेड फ्लैग्स तो वही है जो मैंने पहले ही बताया था आपको, फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस, और फॉर एग्जांपल समटाइम्स पेशेंट जो है ना कहता है कि मुझे शाम के वक्त बुखार आता है, मुझे शाम के वक्त जो है हल्का सा पसीने आते हैं, मेरा वजन कम हो रहा है, तो ये ट्यूबरकुलोसिस की तरफ हिस्ट्री जाती है, और लो ग्रेड फीवर होता है। इसी तरह सम टाइम पेशेंट कहता है कि मुझे नाइट में मुझे पेन होता है, बच्चे होते हैं बहुत सारे ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा के साथ वो नाइट पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर इम्यूनोसप्रेशन की यानी आपको ड्रग हिस्ट्री में ड्रग एब्यूजर्स तो नहीं हो, सब आपने लेने हैं। शोल्डर की हिस्ट्री में सम टाइम पड़ती है तारों की, समटाइम्स अगर शोल्डर के साथ प्रेजेंटेशन करता है तो आपको क्या क्या कॉजेज होता है, आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी, शोल्डर इंस्टेबिलिटी आपको देखनी पड़ेगी, एक्टोमिक लगना, ये यंग पेशेंट में ये कॉमन है, तो आपको उस तरफ फोकस करना पड़ेगा, आपको पता है कि इस एज के अंदर क्या कॉमन है।
शोल्डर में। ओल्डर एज के अंदर क्या है, शोल्डर के अंदर क्या कॉमन होगा, रोटेटर कफ इंजरीज हो सकती है, डीजेनरेटिव प्रॉब्लम होगा, आर्थराइटिस होगा दायरा बूढ़े लोगों के अंदर। शोल्डर के साथ कोई हिस्ट्री लेकर आ रहा है बूढ़ा पेशेंट, तो आपको के जहन में ये होना चाहिए कि ये कॉमन पैथोलॉजीज है। और अगर यंग पेशेंट आ रहा है तो यंग पेशेंट में तो आर्थराइटिस शोल्डर में नहीं होगा इतनी जल्दी। तो आपके अंदर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, वो ज्यादातर ऐसा हो सकता है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज होंगी, और स्पोर्ट्स रिलेटेड समटाइम रोटेटर कफ इंजरी हो गई। शोल्डर जो डिसलोकेट होता रहता है, बूढ़ों में कम है, जवानों में ज्यादा है, तो इसलिए आप उस हिसाब से उसको क्वेश्चन आउट करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी आप पूछेंगे किस तरह हुई थी, शोल्डर डिसलोकेट किस तरह हुआ था, रिलोकेट करते रहते नहीं करते। फिर ये सारी चीजें शोल्डर के अंदर आपने शोल्डर की असेसमेंट, आपने शोल्डर की जब आप पेशेंट आ रहा है तो फिर आपसे पूछते हैं कि आपको ड्रेसिंग करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, सपोर्ट हो रही है। फिर आपको ये पूछना कि आपको टॉयलेट में कैसे होता है, उठने में प्रॉब्लम आती है, हाथ पीछे ले जा सकते हैं नहीं ले जा सकते, आपको ब्रश कर सकते हैं आप कंघी कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये शोल्डर डिसेबिलिटी बता रहा है। आप किसी भारी चीज उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं, ये सब चीजें आपको